आदित्य, आप हमें देख सुन पा रहे हैं? Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Clearly visible to you? Yes, sir. Okay. You're comfortable? Yes, sir. इस समय आप कहाँ से जुड़े हैं ऑनलाइन? कहाँ पर हैं? सर मैं अभी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में? यस। अच्छा। तो अपना परिचय दें, कुछ अपने बारे में बताएं। Sir, my name is Aditya and I belong to Kushinagar district of Uttar Pradesh, where I completed my basic education, and after that I moved from where I completed my graduation, and finally I moved Delhi, where I did my LLB from Campus Law Center, University of Delhi, and I like cooking and reading books. वेरी गुड। आदित्य, मैं एक सवाल जानना चाहता। अखबार में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं पैरोल के बारे में, और दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है फरलो। तो ये पैरोल या फरलो क्या है? एक ही है, अलग अलग है? इसके क्या मतलब? Sir, basically both are the different things, but I'm not sure about furlough, but I have some knowledge about furlough. Okay, tell me about that. Sir, in some cases, when in urgency of some cases where accused is under custody of police, that is in jail or lockup, to deal with some such unavoidable circumstances or to get involved there, accused apply before the magistrate for the parole. So magistrate grant in parole to do or deal with that emergency situations. Okay. What is the provision of Article 142 of the Constitution? Sorry, sir, can you repeat the question? What is the provision of Article 142 of the Constitution? Sir, 142 of the Constitution deals with the power of the Honorable Supreme Court to do the complete justice. In such cases, court used to deal with extraordinary situations where no law is clear, and if court doesn't use this power, there is an irreparable loss to the party. How it is different from the advisory jurisdiction given under Article 143 of the Constitution? So, advisory jurisdiction come into the picture when our Honorable President seek any advice from the Honorable Supreme Court. So, advisory jurisdiction is related with the President, that is part of our Parliament, whereas Article 142 is specifically and completely related with the Honorable Supreme Court to do complete justice. Okay, what is the role of APO in the district court for which you are applying here and you have come here for the drill? What would be your basic role and functions and responsibilities as APO? Sir, Assistant Prosecution Officer is the part of the prosecution wing of the state to perform the prosecution function before the magistrate. So my question to you is, why there is a provision of APO when there is already a person designated as DGC, District Government Council? So why there are two government councils in the same court? So could you hear my question which I asked, that in the district court there is a post of APO, PO, SPO, and also there is a post designated as District Government Council, DGC. So how do they differ from each other, and why there are two different sets of counsel in the district court? So, as far as assistant prosecution are concerned, they are mainly deals with the cases before magistrate court, and the public prosecutor, which is the upper to the assistant prosecution officer, deals with the cases before the sessions court of the district. And sir, I'm not too sure about the last one which you did ask. DGC, District Government Council. There are DGC Civil, DGC Criminal, DGC Revenue. Have you heard of that? No, sir. I'm sorry, sir. Okay.
Very recently, we had celebrated 50th year of a very landmark verdict pronounced by the Supreme Court. What was that verdict and how it is so significant and relevant even today? Sorry, sir, I am not able to recall that judgment. 24th April 1973. I give you this clue, this date. Yes, sir. So, 𝐂𝐏𝐻 Bharti versus State of Kerala is the case which Honorable Board is talking about. Sir, this is the case which is a classic example of a harmonious construction. At the same time, the classic example for the evolution of the basic structure doctrine. And the basic structure doctrine was the minority opinion of Honorable Justice Mudholkar in case of Sajjan Singh, which was accepted by the majority opinion in case of 𝐾𝐏𝐻 Bharti versus State of Kerala. Okay. The meaning of the basic structure is that it is the backbone of our constitutional structuralism, where Parliament cannot abridge the fundamental rights or any backbone of our constitution by amendment. And in this case, our honorable court did the classic work by doing harmonious construction in both fields. They preserve the fundamental right of a citizen, and at the same time they also upheld the amendability right of our parliament. Okay. What is doctrine of colorable legislation? Sir, if I put in very simple words, the colorable doctrine of colorable legislation is related with our doctrine where a parliament or a state legislature, what they cannot do directly, they are also not permitted to do that indirectly. This is the doctrine of a colorable legislation. Okay. Now over to the next one. Thank you, sir. आदित्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपको मेरी आवाज नहीं सही है सर. Okay. So, Aditya, tell me something about your native district, that is Kushinagar. So can you repeat your question again? I asked you to tell me something about your native district, that is Kushinagar. So history in our ancient history, the name of Kushinagar was based on the son of a legendary Lord Rama. And the second thing which is related with the Kushinagar is related to Mahatma Buddha, where he got Mahaparinirvan at the Kushinagar. And in current scenario, we consider the geopolitical situation. It is mainly deals with the China, Japan, and Bhutan in the tourism culture. What is this Mahaparinirvan? Mahaparinirvan क्या था? Yes, sir. So Mahaparinirvan is related with Lord Buddha, where he got died in Kushinagar. Okay. And can you tell me something about Buddhism or philosophy of Lord Buddha? Such philosophy of Lord Buddha is mainly related with equality and based on the things which is more equal in our society. And sorry sir, I am no more thought on that. क्या भारत के कानून में, क्या भारत के संविधान में बुद्धिज्म के एलिमेंट्स दिखते हैं? So if we look at our preamble, we can say that socialist point of view is related with the thoughts of the Buddhism. Socialism. Okay. Yes, sir. आदित्य, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? Yes, sir. आज का पेपर पढ़ा आपने? So आज का भी नहीं पढ़ा है मैंने. अच्छा, आज का पेपर नहीं पढ़ा आपने? So generally I read newspaper in evening after 6 to 7 o'clock. So okay, कुछ लखनऊ में कोल्ड वगैरह में कुछ
इंसिडेंट अकर किया है, तो पता है आप लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई घटना घटी है, कल शाम को ही घटी है। No, sir, I'm not aware about that. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत के फार्मर्स के लिए एमएसपी इंक्रीज किए, क्या जानते हैं आप एमएसपी क्या होती है? Sir, MSP is the minimum support price which government provide to its farmer to support them in case of extraordinary situation which is caused by act of God or these things, so that farmers didn't suffer so very much. ओके, ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट Aditya, Thank you, sir. if police officer refuse to lodge FIR, then what remedies will be available? So our criminal procedure provides deals with such situation. When a police officer refuses to register a FIR, the aggrieved party first instance approves the superintendent of the police, and if he again get negative response from superintendent of the police, he can approach the concerned magistrate. That's all, sir. आदित्य, अभी आपने एक शब्द बोला 156 सबसेक्शन 3 में कंसर्न मजिस्ट्रेट, कि कौन मजिस्ट्रेट होगा, क्या अथॉरिटी, क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए इस मजिस्ट्रेट के पास? Sir, concerned magistrate is a magistrate who is dealing with some jurisdiction where crime was committed. जो FIR. मैं रोकना चाहूंगा, आपने ये जो शब्द इस्तेमाल किया जुरिस्डिक्शन, तो जुरिस्डिक्शन कई तरीके के जुरिस्डिक्शन की बात की गई। एक तो ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन बताया गया, दूसरा अगर हम बात करें कॉग्निजेंस लेने की पावर, तो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा मजिस्ट्रेट होगा जो ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन रखता हो, या जो इंक्वायरी करने का जुरिस्डिक्शन रखता हो, या जिसके पास में ये पावर है कि वो उस मामले पर कॉग्निजेंस ले सकता हो? Sir, the concerned magistrate, as far as I concern, is the magistrate who has power to deal with the case. मतलब ट्रायल करने के लिए ऑथराइज? Yes, sir. अच्छा आदित्य, मुझे ये बताइए कि अगर मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर देता है एफआईआर लॉन्च करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के, क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकता है, नहीं कर सकता? Sir, generally, magistrate cannot interfere in the process of investigation because investigation is the complete jurisdiction, comes under the jurisdiction of the police authority. But magistrate can direct a proper investigation should be conducted by the police officer. आदित्य, जब पुलिस ऑफिसर अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहा, अपनी मर्जी से एफआईआर लॉन्च कर नहीं रहा, तो मजिस्ट्रेट अगर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन, तो इस तरीके से तो इन्वेस्टिगेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, और अगर कंप्लीट होता तो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पर से अगर हम बात करें कि एफआईआर लिख भी लिया गया, इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए हो भी रहा, लेकिन जो पर्पस होना चाहिए था वो पर्पस तो डिफीट हो जाएगा। Yes, sir. To some extent, this purpose may be defeated, but we have faith in our criminal system, in our police system, and at the same time we have faith in our magisterial system also. So there are many judgments given by Honorable Supreme Court which authorize the magistrate to order the proper investigation, and the word proper which used by courts is an binding on the police authority to do its work with due diligence. अच्छा आदित्य, जो आपने बताया कि कई सारे जजमेंट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट के आए हैं कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो एक जजमेंट मुझे बता सकते हैं आप? Sir, it's very recent. Honorable Justice R.F. Nariman in Renu versus State of Gujarat declared the same thing which I mentioned earlier. आदित्य, क्या इस मैटर में कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो सबऑर्डिनेट जजेस वगैरह या जो मजिस्ट्रेट हैं, क्या इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं? इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकते हैं? Such inherent power is given under Section 482 of Criminal Procedure Code,
only deals with high court of the state. So I think magistrate court or session court cannot use this power. आदित्य, आपने सेक्शन 482 की बात की, आप ये बताइए क्या सेक्शन 482 हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर प्रोवाइड करता है या सेक्शन 482 कुछ और प्रोविजन करता है? Sir, on reading this section, it provides that in case of injustice or where law is not clear or where the law is not properly implemented, the High Court of the concerned state may use 482, which is inherent in that High Court. आदित्य, हाँ, आप कंप्लीट करिए. Sir, I think this is the odds on my end because शायद not inherent power. अच्छा. आदित्य, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या सेक्शन 482 हाई कोर्ट को एम्पावर्ड करता है इनहेरेंट पावर का यूज करने के लिए या हाई कोर्ट को एम्पावर्ड नहीं करता है? पावर देता है हाई कोर्ट? Yes, sir, 482 gives power to High Court. गिव्स पावर टू हाई. लेकिन मेरा तो मानना है कि जो इनहेरेंट पावर होता है, इनहेरेंट पावर कोर्ट में तो वेस्टेड होती है. कोई भी सेक्शन इनहेरेंट पावर जो है वो कोर्ट को प्रोवाइड नहीं करता. देखिए, जब आप सेक्शन 482 पढ़ेंगे तो सेक्शन 482 पावर प्रोवाइड नहीं करता है. सेक्शन 482 में क्या लिखा है? नो प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी शैल अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट. शैल अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट. प्रोवाइड नहीं करता. ये एक सेविंग क्लॉज के आदित्य, ठीक है. फिर हमने जो बात की कि क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं. केस ऐड कर लीजिएगा, शकीरी वासु का केस था, शकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये 2008 का केस था जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं. ठीक है. क्या रीजन था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बोलना पड़ा? Sir, I'm not very aware about this point, but I would like to attempt this question. हाँ. What? Sir, Honorable Supreme Court gave the power to lower judiciary because they are more acquainted with the facts and circumstances of case, and some cases which directly comes firstly before the court of a session. So I think that the inherent knowledge is the basic thing on which Supreme Court allow. आदित्य, इसमें जो बेसिक रीजन था ये रीजन नहीं था. रीजन ये था कि हाई कोर्ट पर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ने लगा इन्वेस्टिगेशन का. जितने बहुत सारे मैटर्स जब जाने लगे हाई कोर्ट पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ने लग गया था कि हाई कोर्ट ही हर छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट में भी छोटे छोटे जो थाने हैं उनमें हाई कोर्ट ही अगर इस पावर का इस्तेमाल करेगा तो बहुत सारे मैटर्स पहुंच जाएंगे हाई कोर्ट. इसलिए ये डिवीजन कर दिया गया कि इन मैटर्स में इनहेरेंट पावर का प्रयोग जो होगा वो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कर सकता है. आदित्य, सीपीसी में भी इनहेरेंट पावर है और सीआरपीसी में भी इनहेरेंट पावर. हम केवल प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो प्रोविजंस के आधार पर क्या बेसिक डिफरेंस है? Sir, I'm sorry, sir, I'm not. आदित्य, आदित्य आवाज आ रही है? Yes, sir, आवाज आ रही है. आदित्य, मैं ये पूछ रहा था सेक्शन 151 में भी इनहेरेंट पावर के बारे में बताया गया सीपीसी, सीआरपीसी में भी सेक्शन 482 में इनहेरेंट पावर के बारे में बताया. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? Sir, I think section 151 of a CPC give the power to court to do complete justice in civil cases, and 482 of a CRPC gives power to court, and as I just know, lower courts to deals with the cases in urgencies.
आदित्य रेफरेंस पढ़ा है आपने? रेफरेंस Yes, sir. क्या होता है रेफरेंस, और कब रेफरेंस किया जाता है? So the reference is given under section 395 of Code of Criminal Procedure, where inferior court refer the issue to the High Court on the point of a law or about any legislation where law is not clear or the court has not clear guidelines on the same. So court refer these issues to higher court, that is High Courts, on clarity on this point. सीपीसी में भी दिया गया रेफरेंस का प्रोविजन कहीं पे? Yes, sir. Section 113 of a CPC deals with the reference. और कोई ऑर्डर वगैरह भी है? Sir, yes, sir. There is an order. Sorry, sir. I am not able to recall the name of actually number of that order. ऑर्डर 46, ऑर्डर 46। अच्छा, यहाँ पर भी जो रेफरेंस बताया गया है और वहां पर भी रेफरेंस बताया गया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो रेफरेंस सीआरपीसी में बताया गया और वहां पर जो रेफरेंस बताया गया, उसमें क्या डिफरेंस है प्रोसेस को आगे बढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में? Sir, I think there is no such difference because both reference or deals with the same point, that is whether lower courts has doubt on any point of a law or an. But I think, sir, in CRPC, reference can be made only to the High Court, but in CPC, reference can be made by the inferior court to the upper court. That is, civil judge first class may made to reference to the. आदित्य, मैं बोलना चाहूंगा आपको, आदित्य, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने का राइट होता है वो सबसे जो निचली कोर्ट में, जब से सबसे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट, चाहे वो सिविल मैटर चाहे वो क्रिमिनल मैटर, तो दोनों में मैटर जो होता है वो मैटर जाता है हाई कोर्ट में ही जाएगा, चाहे वो सिविल मैटर हो और चाहे वो क्रिमिनल। हमने प्रोसीजर की कॉन्टेक्स्ट में पूछा था डिफरेंस क्या है, तो जब हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में कोर्ट को प्रोसेस को वहीं पर रोकना पड़ेगा जब वो हाई कोर्ट में मैटर को भेजेगा। लेकिन जब हम सिविल प्रोसीजर कोर्ट की बात करते हैं तो सिविल प्रोसीजर कोर्ट में कोर्ट चाहे तो उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो उसको डिसाइड भी कर सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइड कर सकता है। इसीलिए नया कॉन्सेप्ट सीपीसी में हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्टिंजेंट डिक्री का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्टिंजेंट डिसीजन का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्टिंजेंट डिक्री का हो सकता है, क्योंकि वो डिक्री जो होगी उसमें चेंजेस किए जा सकते। ठीक है, ठीक है आदित्य, your interview is now over. Now we will give you the feedback. Your pressing sense is very good. Your body language is perfectly all right. Your communication skills are up to the mark. And we will only say that keep brushing and keep revising your subject and the matters related to current development. We all hope and pray that you will be selected and come with flying colors in this examination of interview. All the very best. And we expect to meet you soon with a box of sweets after the results. Sure, sir. I will try my best. All the very best. Thank you, sir. Thank you, sir.